मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कौन है हिंदुस्तान से जो हमारे इधर रहना चाहता है, 3 साल से कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश को अंजाम देने का वक्त आ गया है। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कुछ जानकारी देना था। ऐसे फाउंटेन्स जहाँ पर भी आपको मिलेगा ना, वहाँ से आप अपनी वाटर बॉटल भर सकते हैं, बिकॉज टैप वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल इन अज़रबैजान, यू हैव टू बाई वाटर। हाउएवर एक सज्जन थे, एक लोकल थे, उन्होंने बताया कि ऐसे फाउंटेन जहाँ पे मिले वहाँ पे बेझिझक वहाँ से पानी पी सकते हैं। तो मैंने अपना वाटर बॉटल भर लिया, क्योंकि बार बार पानी खरीदना एक्सपेंसिव भी हो जाता है और आप बहुत प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल नहीं है ये। अगर ये ड्रिंकिंग वाटर ईजी होता तो मैं पानी का टैप वाटर ही पीता, लेकिन अभी ऐसा फाउंटेन जहाँ भी मिलेगा मैं भर लूँगा। अभी मैं मिलूँगा अपने एक शेकी। मैं परसों शेकी जा रहा हूँ, जो कि कॉकेसस माउंटेन्स, ये इस जगह को कॉकेसस बोलते हैं। तो कॉकेसस माउंटेन्स में एक छोटा सा गांव है शेकी नाम के, वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ पे एक होटल बुक किया है, एक होम स्टे। तो उसी का जो ओनर है वो एक यहाँ पे रहते हैं बाकू में, तो उनके साथ थोड़ा मिलता हूँ, थोड़ा बातचीत का, तो कैसे शेकी पहुँचना है इन सब के बारे में भी थोड़ा पूछताछ करता हूँ। तो अच्छा ही हुआ, एक लोकल से मिल लूँगा, वो बता देगा कैसे जाना है, क्या करना है वहाँ जाके, तो ये बेस्ट है। अभी इधर पार्क में, इचेरीशहर पार्क में बैठे बात कर रहे हैं निशात के साथ। निशात और हमारी कहानी बहुत पुरानी है। 2019 में मैं प्लान किया था बाकू जाऊंगा, 2020 की यूरो देखने। कोविड हो गया, सब कैंसिल हो गया, बाकू जाना कैंसिल हो गया, एवरीथिंग गॉट कैंसिल। 3 years later again I planned for Baku and I called him up and I said that I will stay in your hotel only. So we are meeting after 3 years. So by that now we have become friends. It is a bond of friendship between us. So I'm very happy that Nishat is here. And your parents stay in Sheki? Yes, in Sheki. We'll wait every time for you. हाँ, so सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कौन है हिंदुस्तान से जो हमारे इधर रहना चाहता है, 3 साल से कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश को अंजाम देने का वक्त आ गया है। Okay. And 25 August. You can make hiking. Hiking, kiss. Chish. No, one time enough for all Sheki. One day enough for all Sheki. Then from Sheki to Gabala, it's far. No. On the street. Nizam Street. तो गांजा गांजा सिटी में निज़ामी गंजवी पैदा हुए थे, और वहाँ पे ही उनका मकबरा है। फेमस राइटर पोएट निज़ामी गंजवी, जिन्होंने लैला मजनू जैसे लव स्टोरी, सबको मालूम है लैला मजनू, लेकिन क्या आपको मालूम है निज़ामी गंजवी अज़रबैजान में पैदा हुए थे, एंड ही इज़ अज़रबैजान नेशनल पोएट एंड ही वाज फ्रॉम गांजा। उनका मकबरा मौसोलेम वहीं पे है, वो देखने का मन था। But the main thing is, Nizami Ganjavi, he wrote in Farsi, not in Turkish. Who say? Yeah. No, Nizam Ganjavi is from Azerbaijan. But he is Farsi, Irani. He wrote in Irani, Persian. No, he also this time poet language is Farsi language. Okay. Also you can see also you can see another poet. Hussein Zadeh. No. Many poets write Farsi language, but they are Turk. They are Turk, yeah. So you are Turk. Yes, you are Turk. Yes. He is Turk. Yes. Do you know Farsi? Yeah, I know Farsi. We have also Farsi, but Iran and Azerbaijan. Iran and Azerbaijan are also Turk. Yes. Before we are one country, but after we have separate. So you speak Kazakh? No, Kazakh language is also Turk language, but little bit different. Uzbek, Kyrgyz. I understand, but I can't talk. So Turkish, Azerbaijani, Turkmenistani is one. Basically, ये Kyrgyz, Kazakh, Azerbaijani, Uzbek, Turkish. They're all Turkic languages, but उनमें से Turkish, Azerbaijani और Turkmani, Western is a different section known as the Oghuz Turks. Yes. And Kazakh, Kyrgyz
and Uzbek and Uyghur, Yes. they are called Kipchak Turks. Turks. So they're a bit थोड़ा सा different भाषा है, but language family same ही है, तुर्क है. Same, yeah. और दिखने में भी थोड़ा सा अलग है. जैसे निसात भाई हो गए, they all look very Middle Eastern. But if you go to Kazakhstan, Kyrgyzstan, they look a bit Mongolian, Yeah. Mongoloid. So Asian. Asian. They look very Asian. They have Asiatic faces. But the language family is Turk. The ethnicity is Turk. There is a lot of similarity between the languages. Mentality is similar. Milton. But Tajikistan Yes. is not Turk. Nothing. Yes, It- Farsi. Farsi. Afghanistan is Farsi. Yeah. Iran is Farsi. Farsi. Yes. India, Yes. Taj Mahal, Turk. Yes. Really? Turk. Babur. Babur Shah. Babur Shah. Yeah. From Uzbekistan come to India. Yes. Mughal. Yes. Babur's son, then his son, Humayun, Jahangir, Shah Jahan, Yeah, Shah Jahan. they are all Turk, Turk, yes. but they don't speak Turk. They started Persian Persian. Yes. because Persian it's more sexy, more stylish. Yeah, yeah, yeah. That's why they started writing in Persian. Yeah, yeah. So many people think in Taj Mahal is built by Persian. No, it's built by Turk who's write in Persian. Right, Persian. Yes. So here are Turco-Persian syncretism. Nader Shah. Nader Shah, yes, I know. He's from Azerbaijan. I know he's from He also Azerbaijan. from Sheki. तो नादिर शाह जो दिल्ली का जो पिकॉक थ्रोन है वो लेके गए थे लूट के, वो भी अजरबैजान से ही थे. You know नादिर शाह come to India Yes. in Delhi Yeah. and he destroyed Delhi. Yeah. Kashmir, Punjab. Punjab, Delhi. Gujarat. He took money, everything, Yeah. and he came here. And so one diamond, diamond, yeah, the diamond. peacock throne. Kohinoor. Kohinoor, yeah. Yeah. So Nader Shah took Kohinoor. Right now Kohinoor is in London. London. Yes. The Queen wears it, Queen, yeah. but it was originally from India. Yes. So people in India don't like these people, Nader Shah, Temur, because they come and they destroy. Yeah. But it's a bit politics right now. Yes. So is Nader Shah a hero in Azerbaijan? Sorry. Nader Shah, the Azerbaijan hero? Yes. He's a hero of Azerbaijan. किसी के लिए नायक, किसी के लिए खलनायक. इतिहास ऐसे ही है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा. He's great lord of Azerbaijan. हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह से देखिए, इसमें सियासत मत लाइए उतना. तो कोई एक चीज़ मुझे याद आया जब मैं हिस्टोरिकल एक पॉडकास्ट सुन रहा था. ये कोई भी अच्छा राजा कभी अच्छा या बुरा नहीं होता. राजा हो, उसमें अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है. अगर अच्छाई बुराई होने लगा तो वो भगवान हो जाता है. So there is no good king. You can say there is always a shrewd king, but there is no good king. This is Ichari Shahid, right? Yes. Here is all the church. Ichari Shahid. Sorry. बात करते करते थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की भी बात हो गई, सियासत की भी बातें हो गई. सियासत इज अ पर्शियन टर्म और तुर्क टर्म. सो पर्शियन में पॉलिटिक्स को, राजनीति को सियासत कहते हैं, उर्दू में भी सियासत कहते हैं. तो हम हिंदी में भी सियासत यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सारे लोन वर्ड्स है, यहाँ आके पता चलता है. बट इट्स नॉट अ तुर्क वर्ड. तुर्क वर्ड फॉर पॉलिटिक्स इज व्हाट? सियासत. Yes. सो दैट्स द लोन वर्ड. तुर्की में भी सियासत ही बोलते हैं पॉलिटिक्स को. सो इट्स अ पर्शियन लोन वर्ड जो उर्दू में भी है, टर्किश में भी है.
ये सारा बाकू बुलेवार्ड है, एकदम वॉकेबल प्रोमेनाड जैसा, कैस्पियन सी के एकदम किनारे, एकदम आई थिंक यहाँ पे गार्डन बना है और इधर आप आई गेस 1-1.5 किलोमीटर तक चल सकते हो और एकदम कैस्पियन सी के किनारे है। मस्त सनसेट्स दिखता है यहाँ पे और एक मस्त फ्लैग पोल है, एकदम बड़ा वाला फ्लैग पोल, बहुत सही है जगह, अच्छा लग रहा है यहाँ के। So Nishat, how long is this boulevard? What is the length? How long? I don't know, but I think more 20 kilometers. 20 kilometers. Yes. Okay, so this is the the marine drive of Baku, 20 kilometers like this. It's called the Baku Boulevard. और मेरे पीछे ये रहा Flame Towers. That is Sokar headquarters. Sokar headquarters, right? Sokar, yeah. So this is Baku Boulevard, which is also in Azeri. It's called Denizli Park. Deniz means sea in Turkish and Azeri both. So Deniz Park. और ये पीछे, and this is the yacht club there. Rich billionaire businessmen, and you know, if you have the money. If you have the money, if you have the mullah, you can have these yachts and have a party. Do ships go from here to Turkmenistan? Yes, Ships go from here to Turkmenistan, Kazakhstan, Russia, Iran, Pakistan, Iran. Uzbekistan, no? Kazakhstan, yes. Kazakhstan, yeah, Kazakhstan. But this is not that is near that side, I think. But this is the yacht club. Like all the rich parties all happen in this. Yeah. And how much is a yacht if I want to hire for a night? I don't know. I don't know the information for that. ये जनाब बाकू का मेरीन ड्राइव, यहाँ पर भी मुंबई जैसा लोग बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं और मेरे पीछे कैस्पियन सी और ये यॉट क्लब. What is that, Nishat? What is that building? That flower kind? That is mall. Then is mall. Okay, it's a mall. पीछे बहुत बड़ा मॉल है. अच्छा लग रहा है यहाँ आके, काफ़ी चहल पहल है, क्राउड अच्छा है. आप यहाँ पे आराम से कई घंटे बिता सकते हैं, पीपल वॉचिंग कर सकते हैं. रियली वर्थ, ब्यूटीफुल प्लेस. रात को और भी ज़्यादा चहल पहल हो जाता है और इट्स अ वेरी लाइवली प्लेस. म्यूजिक बजता है तो सही है जगह. इंडिया के बाहर व्लॉग करने का मज़ा ही कुछ अलग है. लोग घूरते नहीं हैं, लोग स्टेयर नहीं करते, पूछते नहीं. यार इंडिया में भाई साहब, कोलकाता में व्लॉग करने जाओ, बस में बैठ जाओ, people stare like crazy in India. They just don't stop staring. Paying jobs. If you are working in the petroleum industry, it's a good pay. This is change. I think start 500 manat. 500 manat per month is the starting salary, which comes around 25,000 rupees. Mota मान के चलिए. So that's the starting salary in what? Petroleum or no? If you want, if you work at petrol industry. Yes. And teacher have 450 manat. Teachers का 450 manat है. Yes. So teacher get 400. Okay. What about engineer who work there in the oil rigs? Oil rigs. It's maybe they have more salaries. More salary. Yes. 2,000 manat. 2,000 manat. 1,050 manat. This is change. 2,000 manat or almost 100,000 rupees. मतलब 1 लाख रुपए. Rupees, but we have manat and we spend manat. Our salary manat. You must how to say? Cost of living. No. In Azerbaijan we have manat. 1,000 manat
is how many rupees? 1 manat is 47 rupees. 50 rupees. But in Azerbaijan it's not big money. Okay. 1,000 manat is not big money. But if I go your country, it's big money. Yeah, it is big money. Yes. The industry is very, very high paying industry. You see Dubai. Also, in petrol industry in Azerbaijan, you can see Indians, Pakistanis. They work? Yes, they work In the oil rigs. Oil rigs, yes. Kamal. I know some people. They're engineer. Yeah, Indian engineers come and they take training here, Yeah. and they go back to India, Yes. and they teach. Yes, teach. Because Azerbaijan knows oil and gas very well. Yes. वो दोनों चले गए. I'm just sitting here at the banks of the Caspian. I never thought that I will be here one day. I've always read about this in geography books. There is a sea which is not a sea but a lake, world's largest lake. It's a saltwater lake. Water is extremely salty. And geography में पढ़ते पढ़ते एकदम कैस्पियन सी के किनारे पहुंच ही गया मैं. The water is not very clean. Of course, a lot of oil exploration goes on here, and a lot of beluga, caviar fishing goes around here. So, oil exploration is the main reason the water is a bit dirty. तो वो होता है, हर कहीं होता है. अभी भी दूर में oil tankers और rigs दिख रहे हैं. भर के rigs हैं. Everywhere you see there is a rig. There is free Wi-Fi available in the Deniz Kinari Park or the Baku Boulevard, and in the evening it's all lit up. It's just like Moscow. कुछ Moscow जैसा feel है. Like walking around Arbat Square or Red Square, something like that. There are similarities more with Turkey than Russia in Azerbaijan. But there is also a lot of Soviet history, lot of Soviet built monuments over here. फिर से वही निज़ामी स्ट्रीट में. हालांकि आज मंडे है, वीकडे है, लेकिन फिर भी भीड़ देखिए. मतलब लोग यहाँ पे पार्टी 7 दिन करते हैं. इंडिया में कहीं वीकडेज को इतनी भीड़ पार्क स्ट्रीट में हो या मुंबई दिल्ली के किसी भी पब स्ट्रीट में ऐसा भी नहीं देखने को मिलेगा. बट इट्स ऑल अगेन चॉक ब्लॉक. जब ये टर्न्स ले रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है अभी. ये सुनता नहीं है. 1 manat. Petrol is 1 manat. That is 47 rupees. अगर यहाँ पे आ रहे हो, अगर ड्राइविंग आती हो